Good morning, students. Let's start with quick revision of basic rules of accounts. Basic rules of accounts are basically divided in two parts: traditional approach and modern approach. Traditional approach talks about personal, real, nominal account. Personal account, due relationship, debit the debtor, credit the creditor, debit the receiver, credit the giver. Debtor becomes giver and creditor becomes receiver. Real account, debit what comes in, credit what goes out. Nominal account, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Friends, let's understand the pro forma of the balance sheet. Anyone who wants to answer balance sheet pro forma? Raise your hand. Yes, beta, Almas. Yes. Good morning, sir. Good morning, beta. Balance sheet pro Equ- forma. Equity and liability, shareholders fund, share capital, reserves and surplus, non-current liabilities, long-term borrowings, deferred tax liabilities, other long-term liabilities, long-term provisions, current liabilities, short-term borrowings, trade payable, uh, No. other short-term, other short, other current Other current liabilities, liabilities. other current liabilities, short-term provisions, Hmm. asset, non-current asset, property, plant and equipment, intangible assets, capital work in progress, intangible assets under development, uh, non-current investment, deferred tax assets, other long-term loans and advances, other non-current assets, Very current good. assets, Hmm. current assets, current investment, inventories, trade receivable, cash and cash equivalent, short-term loans and advances, other current assets. Very good, Almas. Yes. Anyone who wants to answer accounting standards, all accounting standards? Rajveer, Yes, sir. Good morning, sir. good morning. Remember, beta, all accounting standard names? Yes, sir. ट्राई कर सकता हूँ. हाँ, try करो. Because एस yet वन. we have not started accounting standards, but at least if you answered it, I will be very happy. Huh. एस वन accounting for disclosure of accounting standards. As to valuation of inventory. As the cash flow statements. As for in contingency and events occurring after balance sheet date. As five. Net profit or loss for the prior period items and changes in accounting policy. AS6 नहीं है, AS7 construction contracts, AS8 नहीं है, AS9 revenue recognition, Hmm. AS10 property like plant and equipment, AS11 effect of changes in foreign exchange rates, AS12 accounting for uh, government grants, AS13 accounting for investments, AS14 accounting for amalgamation, AS15 employee benefit, AS16 borrowing cost, AS17 segment reporting, AS18 related party transaction, AS19 leasing, AS20 earning per share. Bus. हाँ Very सर. good, beta. When you studied all these accounting standards, सर रिवीजन तो मैंने परसों परसों किया था फिर से. पर नेम याद रख दिए पूरे. अरे वाह, क्या बात है. अभी तक शुरू भी नहीं हुआ, स्टिल यू रिमेंबर ऑल नेम्स. यस सर. गुड. चलो. Now, today, what we are going to do, because we have one more day for internal reconstruction. So today I am going to tell you how to solve it in exam. So today I am giving you the technique of writing answers in exam, how to solve it. Okay. So today what we'll do, we'll take this one by one question, exam questions, but by using our stopwatch technique. Okay. So every one of you will write it in the proper paper, all these answers. Okay. And let's start. Today we will take some different type of revisions. We'll take a revision only. Randomly two questions of financial statement, two questions of internal reconstruction, and two questions of one question of buyback and two questions of cash flow statement. Okay. So today we'll do some revision, but how to write answers in exam. So today's session is very important. Today we are going to start with answer writing practice. Okay.
So we'll start with the latest examination question of balance sheet only. ठीक है. So we'll start with the question number. I have given you it in the list. Question number 12. How many of you are ready to answer it? Okay, open this question. It is available on your WhatsApp also and on our in our answers also. Okay, I want all answers of cash flow statement, buyback. Then we'll start with the financial statement, and last one is internal reconstruction. So today is a practice day. Chalo. Yes, Anushka, beta, read it. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग बेटा. स्टॉप वॉच हम लोग चालू करेंगे आज, तो थोड़ा सा स्पीड में रहना है आपको. ओके, ओके सर. क्वेश्चन नंबर नाही गरज नाही इथं. एक मिनिट हा. Yes, your time starts now. Following is the balance sheet of Torma Limited as on 31st March 2023. What are the adjustments? As on 1st April 2023, the following scheme of reconstruction was finalized, for which necessary resolution was passed. Okay, वो ठीक है. So in exam, what you will do? Equity share is subdivided into 10 fully paid up shares of 10 each. Chalo, so how many number of shares are there? 16,000. But rupees are in lakhs, okay? Yes sir. Okay, so 16,000 into 100, you will convert it into 10 fully paid up equity share. 1 lakh 60,000 into 10. Okay, Yes. so what is this called as, beta? Alteration, correct? Yes. Yes Alteration, sir. and after subdivision, you will surrender the company 40% of its holding. So 40% of the holding for purpose of reissue to trade payable. So this is a question you already solved. This is called as the surrender of shares, correct hai? Yes sir. तो 40% कितना हुआ बताओ? This is 16 lakhs, and we will keep figures in lakhs only. We are not going to change figures in. Okay, so we'll keep figures in lakhs only. So what is the amount? Share surrender 6.4 lakhs, 40%, correct? 16 forza. Preference shareholder would give up 30% of their capital. So for 40% of their capital means 30% of their capital. What is the balance in the capital? Preferential capital 8 crores, correct? Yes. So Sir 8 8 crores, 8 lakhs, sorry, 8 lakhs का 30%. तो कितना give up किया? 2.4. 2.4. And 12% debentures will be issued for balance. So what is the balance? 5.6. Correct? Yes sir. Yes Then the sir. company would additional issue of 12% debentures for 4 lakhs to meet the working capital requirement. Okay, so 4 lakhs ka debentures issued, and the final settlement of bank OD is 90% of the amount. So bank OD kitna hai? What is the bank OD? Short term borrowings में रहेगा ना? Yes sir. 1.4. हाँ, तो 1.4 का 90% we are going to pay them. तो 1.4 का 90%
as a final settlement? 1.26. 1.26. Very good, beta. Existing debenture holder would accept the furniture and fixture in full settlement of their dues. So existing debenture holders. So debenture holders 3.2 plus 0.32. So 3.2 plus 0.32 is their claim ना, including interest. Interest को मत भूलना. Yes, sir. और उसके बदले में what is the value of the furniture and fixture? 2.8. 2.8. Very good, beta. 2.8 is the value of the furniture and fixture. Correct? Yes, sir. Then trade payable claim shall be reduced to 70%. What is the trade payable value? Trade payable value is 1.15. 1.15. Very good. So 1.15 into 70%. 0.805. Into 70%. Do it properly. कैलसी की तरह मैंने 1.5 Sir, 1.15 है trade payable. 1.05 आएगा ना बेटा. No, sir, trade payables 1.15 है. What I have written? Okay. एक सेकंड ना. वन पॉइंट वन फाइव. हाँ, उसका 70% इज सॉरी 1.15 इंटू 70%. 0.805. करेक्ट. चलो आगे. Yes, The share surrender and not reissued shall be cancelled. So what is the value of share surrender? 40% of the equity share. Okay, that is 6.4 na. Yes, sir. Out of 6.4, we have given to trade payable 1.15. नहीं, 0.80, 0.085. Yes, sir. Correct है? Yes, And sir. remaining we cancelled. So 5.595. 5.595. We cancelled. Okay. The taxation liability is settled at 50,000. What is the taxation liability? 0. Short-term provisions. 0. 0.42. Yes, sir. And we settled at 0.5. So it's a loss. Loss of rupees 0.08. Correct? Yes, sir. Next. Investment value to be reduced to. Market price. So what is the investment value? 1.8 ka 1.10. That Yes. is 0.7. 0.7 is a reduction. Correct? Yes. Balance of P&L is to be written off. That is the hidden adjustment that we are already aware. 9.10. See, already 7 minutes are over. And inventory is increased by 32,000 means 0.32. And trade payable pay 5% is created as a. Yes. So 5% of trade receivable. What is the trade receivable value, my dear? 4.32. So Yes, 4.32 means 4,32,000. into 5% means 4,32,000 नहीं रे. 0.216. Correct है? Yes, sir. Okay. And then whatever the balance in the capital reduction, it will be transferred to capital reserve. ठीक है. चलो. So start. चलो, write it. First, what we are going to prepare in exam. So in 7 minutes, you have completed full question. Yes, 7 sir. minutes में आपका पूरा question हो गया. Correct है? Yes, sir.
Chalo. First, what are you going to write? Books of, what is the name of the company? Torma Limited. Torma Limited. Journal entries. Yes. Are you writing or you will help me? Sir, I am writing. Very good. Serial number, because we do not have date. Serial number, particulars, debit rupees, credit rupees. Rupees in Lakh. lakhs. Draw the format. फटाफट format draw करो. Of 2 pages. टू पेजेस का फॉर्मेट ड्रॉ करो. हाँ बेटा. Yes, sir. Have you done it in foundation formats and all? Yes, sir. This session is very important. Reason is because you will understand how to solve it in exam by using stopwatch technique. And use same technique for normally for all illustrations. Okay. Yes, sir. Are you solving all problems by using tick-tick-easy technique? Yes, sir. Right. Okay, very good. Chalo, journal entries. First journal entry. First journal entries. Equity share capital. बोलिए. Equity share capital account. Debit. Rupees 100. Yes, sir. 16. To equity share capital. Rupees 10. 9.60. To Share surrender. share surrender. Amount 6.4. 0. Being subdivision of shares and surrender. Okay, narration is not important, only in short you will write it. Yes. Number two beta. In number 2 we have 2 entries. Yes, sir. That is 12% preference shareholders. So preference share capital. Yes, sir. 12% preference share capital account debit. 12% preference share capital account debit. 12% is there, no? No, sir. 6%. 6%. Why are you telling 12%? Sir, I did 6% preference share capital account debit to 12% debentures Yes, sir. to capital reduction. Deduction. Okay. So what is the amount? 8, 8. 5.6, Yes, sir. 2.4. Being 12% debentures 12% debentures issued to issued to preference shareholders. yes, sir. And Roman 2. Hello. Roman 2 Bank account debit. to In that only, no? yes, sir. We have 2 entries in that. No. 3 is there. Sorry. Number 3, not Roman 2. Only 1, 2, 3. Bank account debit to 12% debentures. Yes, sir. Bank account debit. To 12% debenture. How much? 4. 4 lakh. Being debentures issued
for Yes. cash. For cash. And after that, what you paid, beta? Bank OD, OD has which balance? credit balance, So we will give. Now we debit. want to pay it debit to bank. Yes, sir. To bank. So what is the amount? Amount is the 1.26. We already yes, written on that. yes, sir. Being bank Being OD paid. paid. Next entry. Number 4. Now 1, 2, 3 over. Existing debentures would accept furniture and fixtures. So existing debentures means debentures 10%, Yes, sir. and in we will cancel it. No, beta. Debentures of which balance? Credit balance. Credit balance. Interest payable account debit 3.2, 0.32 to To debenture holders. To debenture holders. What is the balance? 3.5. 3.52. Yes, sir. Correct? Yes, sir. Being amount due to Debenture holder. debenture holder. तुझ्याकडेच ठेव. And then debenture holder account debit. Yes, sir. Debenture holder account debit. So what you are Furniture, paying? furniture and fixtures. Furniture and fixture of 2.8. No? Yes, sir. 3.52, 2.8, and 2 Capital reduction. capital reduction. What is the balance? 0.72. Yes, Being sir. debenture holder settled. Yes, sir. Small and sweet narration, huh, beta? Yes, sir. Number 5. Now, what is number 5? Trade payable claim shall be reduced to 70%. But see, are you paying out of your share surrender, or are you paying by out of your pocket? Sir, share surrender. Share surrender. Very good. So this is red pen entry, huh, beta? So we will Yes. transfer whole balance of trade payable to capital reduction. Got the concept? Yes, sir. Because we are not paying from our pocket. We are paying from share surrender. So therefore we will transfer whole balance to the Share surrender account. capital reduction account. Okay, sir. Being trade payable settled. And then you are issuing number 6. Now this share surrendered, out of that, what is the balance in share surrender account? In first entry, 6.4. Correct? Yes, sir. Yes, sir. So out of 6.4, you are going to pay to yes, beta, equity share capital. Yes, sir. You are issuing 0.805 shares, no? Yes, sir. And remaining shares you are transferring to capital reduction 5.595. Being share surrendered issued to whom? Trade payables. Payable. And balance cancelled. Easy? Yes, So very, sir. very important. I already taught you this concept. Huh? Trade payable, full amount will be transferred to capital reduction. So this is the IMP point. So normally students make mistake. Number 7.
5 and 6 over. Yes, Then sir. taxation Tax liability. liability. So provision for tax. What is the balance of provision for tax? Normally credit. Normally credit, now debit. And what Yes. is the settlement amount? 0.5. 0.5. So capital reduction account will be debited. Deb. 0.08. Say yes or no. Yes, sir. Being tax liability paid. So your book value you cancelled and payment you made by this. Correct? Over? Chalo. Next is, next tell me beta. Taxation over 8 number. Investment reduced to their market price by 0.7. So what is the reduction price? Capital reduction account debit Yes, sir. to, normally what is the balance to investment? Debit, but we will give credit. Reduce it. So give credit. Very good. Yes. Being investment carried at market value. From book value, we shifted to market value. Number Yes. 9. Balance in P&L. What is the balance in P&L? Balance in P&L 9.1. What is the balance in P&L? Debit balance, no? Yes, sir. So what is the entry? Capital reduction account debit to profit and loss. Profit and loss. Being P&L balance transferred. Transfer to. Capital reduction. Yes, you can write or only transferred. Keep Yes, it very sir. short and sweet. And now Yes. all entries are over, beta? No. Yes. No, sir. Inventory value. Inventory. So capital reduction. No, inventory is appreciated, na my dear? Inventory account debit. Yes. Can I pass it in one entry only? Yes, And sir. to provision for doubtful debts, credit. To provision for doubtful debts, credit. And Yes, sir. balancing figure is to capital reduction. Otherwise, I can pass two separate entries. For inventory different and for provision different. So what is the balance? 0.32, Yes, sir. 0.216. So 0.32 minus 0.216. What is the capital? 0.104. Correct? Yes, sir. Being inventory appreciated and provision for doubtful debts created. And now capital reduction account. Chalo, low calci pe. On calci. Capital reduction 2.4 2.4 plus 0.72 plus 0.72 plus plus 1. 1.15 Yes, sir. Plus plus 5.595 okay minus 0.08 minus 0.08 minus 0.7 minus 0.7 0.7 minus 9.1 minus 9.1 at 0.104 0.104. So what is the balance? 0.089. In last entry क्या हुआ है बेटा? Yes, Almas is saying something. Sir, in last entry, capital reduction should be debited. No, beta, it is credited only. I am getting the different balance. Still any mistake, beta? Check it, check it, check it.
How much balance you all are getting? $2.4. Same balance you are getting now all. Prepare reconstruction account and balance sheet. Yes, reconstruction account. Particulars. Rupees. Prepare it fast, beta. And particulars, rupees. 0.089 ना? Yes, sir. कुछ तो गड़बड़ हुआ है while writing. Let's check it. Yes, किसी का बैंक could settle at 90%, no? So 2 capital reduction. 1.26 into 90%. 1.1. हेलो, अभी आ रहा है? अनुष्का, Yes, sir. are you getting the answer now? 0.229. No, See, sir. beta, when entry we got wrong, bank OD account, bank OD to bank to capital reduction. Are you getting it now? Yes, sir. वो This 9. entry we got wrong answer. Yes, sir. 90% settle, no? Yes, sir. So do changes. Okay, and now you have to increase it by 0.14 capital reduction account. Capital reduction कितने से increase करना है आपको? You got 0.89, no? कितना मिला था आपको? 0.8. 0.89. Yes, sir. We got answer 0.089, and now we are increasing it by 1. We are increasing it by 0.14. Yes, sir. So what is the balance in capital reduction? 0.089. 0.229. 0.229. Chalo. Now we will prepare reconstruction account. Okay? Or Yes. capital reduction account. First entry, credit or debit? First entry, credit 6% preference share account. Preference share capital 2.4. Then this is also credited. Bank OD. Bank OD 0.14. Bank OD 0.14. Yes, Bank sir. बैंक OD कितना? 0.14. 0.14. lecture. Next.
Next, credit debenture holder 0.72. By debenture holder, how much? 0.72. 0.72. Next, Trade payables credit trade payable credit, 1.15. yes. Next, हाँ जी, Next, credit share surrender share surrender credit. बोलिए. 5.595. Next, debit Debit, to bank, yes sir, point. 0.08. Next, Next, debit to investment 0.7. 0.7. Next, Debit P&L to P&L to P&L 9.1. 9.1. Oh, sorry, I forgot to start this. And buy Buy inventory inventory and RDD 0.104. And yes, balancing figure transferred to capital reserve star mark 0.229. Let's see both sides are tallying or not. yes sir. I'm getting the tallying figure 10.109 minus 2.4 minus 0.14. This is the exam speed, beta. Many students are asking me, sir, exam का speed कैसे होता है? So this is the exam speed. Okay. Now what to do? Entry by entry, we will prepare balance sheet, but first prepare pro forma. Yes sir. Balance sheet as per question only. Serial number, जीवनला phone. Serial number, particulars. Serial number, particulars, Notes, notes, rupees in lakhs. yes sir. Equity and liabilities. वन. हाँ बेटा फटाफट बोलिए. One shareholder fund, Shareholders fund, share capital, share capital. B, B reserve and surplus, 2. non-current liability, Very good. long-term borrowings, Hmm. third current liability, एक मिनट ना बेटा, एक ही मिनट ना. Next is under current liability. I think balance is 0, no? yes sir. No sir, other current liability है अभी. वो भी settle हुआ ना. Other current liabilities debentures and short term provisions is also done. Interest, तो करंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ही रहेगा. नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. yes sir. सॉरी, इधर 2 नहीं है, ये नॉर्मल 2 आएगा. Yes sir. देन Assets, एसेट्स, non-current assets, नॉन करंट एसेट्स, property, plant and equipment, पीपीई, uh, intangible assets we have
Yes, sir. Then we have non-current investment. Yes, sir. Then we have Current asset, in current assets, we have inventory, inventory. trade receivable, Very good. cash and cash equivalent. I know it will take time, but beta, we don't have any option. Okay? After Yes. that, Total and notes. total notes to account. Start writing. Serial number, particulars, inner column, outer column, and in above that in lakhs. Balance sheet may be rupees in lakhs. We already written. Yes. Serial number 1, share capital. Okay? Yes, sir. Write down issued, underline subscribed, and paid up capital. Correct? Yes, sir. After 5 lines, we will write reserves and surplus. Correct? Yes, sir. After 5 lines, number 3, yes, long-term borrowings. Yes. After 5 lines, 4 lines, property, plant and equipment. After 4 lines, intangible asset. Non-current investment. Inventory will do over there only, no? Yes, sir. And trade receivable. Beta, it's very difficult to finish this in 30 minutes. It's very challenging है ये बहुत. And number 7. Done? Yes, sir. Chalo. So now, what you have to do? One by one, you will first update your balance sheet of question. Correct? Yes, sir. So equity share capital 0. Yes, So sir. equity share capital 10 is 9.6. 6. Share surrender is a temporary account. Then 6% Yes. preference share capital 0. 12% debentures, we'll write it under Long-term borrowings. long-term borrowings. How much? 12% is a new head. 5.6. 5.6. 6. Next, Next, 12%. bank account we added. Bank account we add how much? 4. 4. And 12% debenture also we will add 4. So ये entry हो गया. Bank OD to bank. So OD 1.4 से 0. And 1.13 for bank minus. 0. And 1.26. 1.1. हाँ. Yes, sir. 1.26 से 0 माइनस किया. 10% debentures 0. 0. Interest payable be 0. Interest payable be 0. Very good. Then furniture minus 2.8. Yes, sir. फर्नीचर 0 ही हुआ ना वो भी. Yes, sir. 0. Then trade payable 0. And equity share capital at 0.805. And equity share capital में add 0.805. Yes, sir. 0.085. 805. Sorry. 0.805. Correct? Yes, sir. And provision for tax 0. 0. Bank minus 0.5. Very good. Bank minus 0.5. 0.5. Investment minus 0.7. Yes, sir. Or you can write directly 1.1. Na?
Yes, sir. 1.1. Then P&L P&L पे P&L 0. Then provision for doubtful debts provision for minus 0.2216. minus 0.216. Inventory Then add 0.32. 0.32 add it in Inventory inventory, and then capital reserve reserve, reserve reserves and surplus 0.229. 9. Okay, so in exam you have to do this. चलो equity share capital फटाफट लीजिए 9.6.805, so 10.405, correct? Then Yes, sir. 0.229, then 5.6 plus ये 9.6, then Yes, sir. 0.0000, then plant and machinery 5 as it is, plant and machinery, patent 1.7 as it is, and Yes. investment 1. 1.1. चलो एक बार वापस बोलो. इक्विटी शेयर कैपिटल 10.405, then capital reserve 0.229, then you have long term borrowings 9.6, other 9. things will be 4 and Same. 500. 0. हाँ, so ये सभी जीरो ही है. Yes, sir. And assets में 5 1.7 as it is, and non-current investment 1.1. Then your inventory will be 5.12 plus 0.32, 5.44. Then your trade receivable is 0.216, 4.104, and cash equivalent will be 0.65 plus 4 minus 1.26 minus 0.5. So बेटा इन एग्जाम कितना फास्ट करना पड़ेगा सोचे, फिर भी 35 मिनट्स हो गए. 2.89. Yes. 20.234. कुछ तो गड़बड़ हुआ, मेरे से गड़बड़ हुआ है, सॉरी. कितने से? हाँ 20.234. ओके, नहीं करेक्ट है. 10.405 प्लस 0.229 प्लस 9.6, 20.234. बैलेंस शीट इज टैलिंग. Yes, ओके, sir. चलो. सो फिल इन द ब्लैंक्स करो अभी फटाफट. यू कैन टैली योर बैलेंस शीट लाइक दिस. अभी फटाफट इधर से देख के लिख लेने का. 10.405. 5. फिर यू अंडरस्टूड 0. ना क्या करना है? 0.229, Yes, then sir. 9.6, 1.6. then PPE 5. 5, 1.7. 1.7, And non 1.1, 5.44, trade receivable 4.04. 4.104. Cash 2.89. Okay, now एग्जाम में ऑलरेडी प्रेशर है, सो यू कैन डायरेक्टली राइट द अमाउंट्स, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा. एंड इशूड कैपिटल कितना था? 10.404. सो 10,404 है ना, तो हाउ मेनी No, sir. शेयर्स यू इशूड? 10.405, सॉरी, करेक्ट ना? इक्विटी शेयर कैपिटल. Yes, sir. हाँ, तो 1.404 शेयर्स, और यू कैन राइट 10.405 इंटू 1 लाख, तो ये 10,40,500 डिवाइड बाय 10, तो 1,04,050 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each. Got this? Yes, sir. Reserves and surplus में what you are going to write? Capital reserve 0.229, correct? Yes, sir. You can take a total also 10.405. So this is your saving of time. Long term borrowings में what you are going to write? 12% debenture 12% 9. debentures. Directly you can write 9.6. 9.6. Then you have property, plant and equipment, Yes, sir. plant and and machinery. How much? 5. plant and machinery 5. 5. Only one asset is there, so you can directly take total.
Patents and copyrights 1.7. 1.7 directly total. Then you have non-current investment Yes, sir. 1.1 and then trade receivable. Book value कितना था? Gross value. Book value is 4.32 minus RDD 0.216 and therefore you are getting the answer 4.104. Understood? So this is how you are going to 4.32 minus 0.216 yes 1404. How much time it takes beta? Exactly 40 minutes. Abhi actually what is the ideal time? I think this is for 20 marks. मैं exact timing आपको ये बताता हूँ. इसके marks बताता हूँ. मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है अभी. एक्चुअली 16 मार्क का भी हो सकता है पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड था टू राइट ऑल आंसर्स. सुनो ना 2023 का क्वेश्चन कितने मार्क्स को था एक बार बताइए ना. ये स्कैनर में देख के मैंने आपको बोला भी था मार्क्स लिखा करो वहां पे. 20 मार्क्स नवंबर 23 में आया था. सो 20 मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 1.8 मिनट्स वी हैव 36 minutes, but we completed it in 42 minutes. 5 minutes extra because very huge question. So 20 marks का question है. November 2023 में आया था. November 2023 and it was for 20 marks था ये. 20 marks. Yes. See beta, I have taken this question deliberately because I have to tell you in exam if you have 20 marks question how to solve. Many students are asking me, sir, we are getting the concept but we are not getting how to write it in the exam. See, notes to account. Now handwriting is in the readable form. It's not like that you have very beautiful handwriting. See, some students, and now my handwriting is very bad. Okay, I won't deny कि my handwriting ये बहुत अच्छा है करके. But see, but it is the readable answer. Okay, अभी आप पेपर चेक करो अनुष्का. तो मुझे एक बात बताओ, आप एटलीस्ट मुझे मार्क्स तो दे ही दोगे ना थोड़े बहुत तो. क्या पूरे मार्क्स दे दोगे? सर पूरे दे देंगे. पूरे दे देंगे. ओके. बट प्रॉब्लम इज दैट हाँ sir, each item to be disclosed in the notes to account. See, now there is no standard means there is a standard format, but better see we have very less time. So if I mention each and every accounts in the notes to accounts, so it will be very difficult. तो कभी कभी जितने relevant items है that I will write. 000 वाले item I can skip it. Okay, because it is also depending on your time which is required beta. If you have sufficient time to write the answer, then it's okay. Now 20 marks, we already have only 36 minutes in hand. And how much extra time we are going to take? 5 minutes extra. And in 5 minutes also beta, see, if one adjustment is also got wrong, no, don't get panic. Okay, अभी मेरा तो मुझे समझ में आ गया, बैंक कोडी अकाउंट को मुझे पे करना था. But in exam it might happen that everything you won't get it correct answer, you know. तो आप क्या करना है, आपको जहां पे भी आपका टैली नहीं भी हुआ, डोंट गेट पैनिक. सी ऑलवेज रिमेंबर वन रूल कि 50% भी पोस्टिंग करोगे तो 50% से ज्यादा ही मार्क मिलेगा. सो रूल इज वेरी सिंपल. इफ यू हैव एटलीस्ट पोस्टिंग तो ये आपको करना पड़ेगा. आई सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 1.5 hours. ओ माय गॉड रोजी, इतना टाइम नहीं ले सकते बेटा. नाउ हाउ टू इंप्रूव द स्पीड? Now this is the second one. Yes, now you can ask me questions. Sir, how to increase the speed? As I solved this question in 1.5 hours. Better ठीक है Rosie. If you are doing it for the first time, you may take extra hours. But better when you are revising it in these 9 months, no, you have to solve same question again and again and see whether you are getting this question of 20 marks. Well, are you able to solve it in 40 minutes? Okay. Sir, can I write short forms in narration? Okay, so you can mention that short forms bhumika at the end. Okay, debenture holders ko I have used that shortcut. Preferential capital means PSC. I have used the capital preference, but capital at least you write CAP, and at the end you can mention it. Ki I use this shortcut. Or see, this is very difficult. Out of 100 students, 10 to 20 students can match this all answers, and by using the tick tick means by solving it within time. So it's very difficult. सर टेंशन में आके पूरा क्वेश्चन ही कट कर दे तो स्टेप मार्किंग से भी नो बेटा. कुछ भी होने दो प्रियंका, आपको क्वेश्चन को कट नहीं करना है.
डोंट गेट पैनिक। सपोज आपका 2-3 एंट्री गलत भी होता है ना, तो वो वैसा ही रहने दीजिए, पूरा कट मत कर जाइए। होता है, दिस सी ह्यूमन बीइंग, तो होने वाला है, मिस्टेक्स तो होगा, वी आर नॉट रोबोट्स। तो अपना लिखते टाइम तो ये होगा ही। इसीलिए तो आज का सेशन मैंने रखा कि भाई आप लोगों को टेंशन आया तो भी एक आधे एंट्री से कुछ नहीं होता, एटलीस्ट वो बीच में आप एक लाइन छोड़ते हो ना, यू कैन रेक्टिफाई ओवर देयर ओनली। ठीक है, तो आप प्रियांशी डोंट वरी। तो ऐसा होगा कि आप लोगों को पूरा 40 मिनट्स में नहीं हो पा रहा है। सी ये टाइम पे सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। नाउ अनुष्का हैज गुड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। सर will be there negative marking? No beta, for wrong answers. Why Rosie? Whether this is फाउंडेशन एग्जाम ऑफ मैथ्स, तो रॉन्ग आंसर्स को निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, सिर्फ इंप्रेशन खराब होता है। ओके, तो इंप्रेशन अच्छा रखना है अपने को। सो ऑलवेज टेक क्वेश्चन ऑफ 8 मार्क्स टू 10 मार्क्स इन एग्जाम एट स्टार्टिंग। आपका इंप्रेशन स्टार्टिंग के 3 आंसर्स में होने वाला है। ओके, तो ऑलवेज पिक 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन। आफ्टर दैट, ये 8 to 10 मार्क्स के बाद आफ्टर दैट यू कैन गो विथ 20 मार्क्स क्वेश्चन, एंड इन 20 मार्क्स क्वेश्चन यू आर गोइंग टू बिकम पैनिक। डोंट वरी अबाउट दैट, ये होने ही वाला है, विथ सबके साथ होता है। व्हेन आई वाज गिविंग एग्जाम मेरा भी पैनिक होता ही था, बट सी आई हैड कॉन्फिडेंस कि इफ आई अटेम्प्टेड 70 मार्क्स आई विल गेट 60+। तो वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओके, तो कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट while सॉल्विंग इट, while you are doing revisions, always use this technique. ओके, वो पैनिक में आके सॉल्व करो, मींस एवरी क्वेश्चन यू यूज दिस टेक्निक। 20 मार्क्स का क्वेश्चन मल्टीप्लाइड बाय, सर क्वेश्चन पेपर में लिख सकते हैं बाय पेंसिल, फटाफट लिख दो ना, एंड टेल दैट एग्जामिनर सौम्य जी कि आई एम राइटिंग दिस ऑन आंसर पेपर बिकॉज आई विल रब इट, बिकॉज दिस क्वेश्चंस आर वेरी लेंदी, सो वी हैव टू नोट डाउन सम पॉइंट्स ओवर देयर। ओके, एंड यू कैन टेल हिम। तो आप वो आपका आप कैसे सामने वाले से बात करते हो, दैट डिपेंड करता है। तो उसको बोलना हम सीए स्टूडेंट्स हैं, हम थोड़ी कॉपी करने आ रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू राइट समथिंग ऑन पेपर ना। ये मैं लिखूंगा ही नहीं तो कहां से मेरा टैली होने वाला है। तो ये फटाफट सर मैं फिगर्स बदल दूंगा, बाद में रब कर देता हूँ। ओके, एंड आई एम राइटिंग इट वेरी इन स्मॉल हैंड राइटिंग में लिखूंगा, तो उनको थोड़ी वो छोटा छोटा थोड़ी पीछे वाले को दिखने वाला है। दैट इज नॉट द कॉपी केस, थोड़ा समझाओ उनको। ओके, नेक्स्ट, और कुछ क्वेरीज है? Yes, now I know 40 minutes में कंप्लीट करना is very difficult. Prem Kumar is saying कि sir, when I got 20 marks question which is very simple like this, I enjoy this question. Okay बेटा, तो you can solve this question first, but understand कि 40 minutes में ही solve करना है। You have maximum 40 minutes to solve it. तो आप देखिए, ये एक्चुअली इंस्टीट्यूट ने लिखना चाहिए कि वहां पे इग्नोर नरेशंस, ये लिख के देना चाहिए, पर नाउ आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। ओके, तो वो एग्जामिनर का चॉइस है, उसने लिखना चाहिए कि भाई ऑलरेडी कम टाइम में लिखना होता है, तो एटलीस्ट यू कैन राइट ओवर देयर कि इग्नोर नरेशंस, तो उतना टाइम आपका 2-3 मिनट तो बच जाता है ना। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो नरेशंस ठीक है, अभी लिखना पड़ेगा, फिर भी मैं एज अ जो भी सजेस्टेड आंसर है उसके हिसाब से बताऊंगा। तो एज पर सजेस्टेड आंसर्स नरेशंस आर गिवन, तो आई विल टेल कि राइट एटलीस्ट इन 1 लाइन ऑल नरेशंस, पर 2-3 मिनट्स उसमें ज्यादा जाएगा। ओके, in last exam paper one question where ignore narration is written. Yes, examiner बेटा भगवान था, फिर अच्छा आदमी था। हाँ, next, what is the doubt? Yes, you can raise your hand. Rosie, yes बेटा, do you have any question? No, Today, sir. if you have any question you can ask me today, कि आप मुझे बताओ कि sir related to how to write it in exam. We have completed 4 papers, 4 topics. So first chapter we have completed financial statement, balance sheet and P&L. Second, cash flow statement, buyback, and now internal reconstruction. So now I told you the technique of writing it. Okay, आज का सेशन हमारा writing in exam is very important. Sir, we are getting all concepts, but how to solve it in exam, and you have to solve each question like this. अपने अपने टाइमिंग वहां पे लिख के रखो कि मैंने दिस क्वेश्चन आई सॉल्व पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन। सी मॉड्यूल का क्वेश्चन भी आपको ये करने की जरूरत नहीं है, यू कैन सॉल्व पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन एटलीस्ट 4-5 पेपर्स, तो आपको आपका टाइमिंग समझ में आ जाएगा। ओके, सो एवरीवन हैज टू अंडरस्टैंड इट कि ओन हाउ मच टाइम वी रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये ध्यान में रखो। कैन वी अपडेट बैलेंस शीट आफ्टर ईच एंट्री? नो बेटा, इट विल टेक टाइम। नो राजवीर,
एक बार पूरा कंप्लीट करो, फिर उसके बाद अपडेट करते बैठो। ओके क्योंकि सम एंट्रीज के बाद ऐसा हो सकता है कि अगेन एंड अगेन दिस एंट्रीज बेटा, सो इट डू इट आफ्टर ऑल जर्नल एंट्रीज। नेक्स्ट, व्हाट यू हैव टू डू, नॉट व्हाट इज योर फर्स्ट प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? फर्स्ट स्टेप, you read the question and wherever possible do changes in question only or do calculation in questions only. ये फर्स्ट 15 मिनट्स में ही कर दो। व्हेन यू आर गेटिंग 15 मिनट्स टाइम टू रीड नो, तो आपको पता है फटाफट 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 इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। सो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में व्हाट यू विल डू, फर्स्ट 15 मिनट्स में ओनली डू दिस इन फर्स्ट 15 मिनट्स ओनली। ओके, ऑल दिस क्वेश्चंस का कैलकुलेशन ओवर देयर ओनली। सेकंड, आफ्टर दैट क्या करोगे, एग्जाम में डायरेक्टली जर्नल एंट्री से शुरुआत करोगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। फटाफट कैलकुलेशन हो गया, उधर के उधर जर्नल एंट्रीज किया। तीन, फिर कैल्सी यू हैव टू टेक इट एट द एंड। कैल्सी का कैपिटल रिडक्शन अकाउंट वी ओपन, फटाफट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट वी हैव कंप्लीटेड एंड देन अपडेटेड आवर बैलेंस शीट का बैलेंस शीट ऑन क्वेश्चन ओनली एंड देन वी रोट द आंसर अकॉर्डिंग टू बैलेंस शीट प्रोफॉर्मा ऑफ क्वेश्चन। एक थोड़ा सा सीक्वेंस वी हैव टू चेंज कि मैंने बैलेंस शीट पहले लिख के दिया आंसर में। व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट अपडेट योर बैलेंस शीट एंड सेम बैलेंस शीट यू कैन कॉपी इट फ्रॉम द आंसर। ओके, फटाफट वो कर सकते हो। ठीक है, यस, एनी क्वेश्चन यू हैव, आई विल टेक योर क्वेश्चंस। रानी कुमारी, गुड आज मॉर्निंग मजा, सर। आज मजा आया बेटा आपको? यस सर, बहुत ज्यादा। आज 20 मार्क्स कैसे सॉल्व करना है ये समझ में आया ना आपको? यस सर। सर आपने लाइक यहाँ पे 40 मिनट्स में हुआ, तो मैं 45 टू 46 मिनट्स मुझे लगा है। ठीक है, ओके, 45 मिनट्स ज्यादा हो जाएगा, 5 मिनट आप लोग सर ऐड। सर एक्चुअली टिकटिकी के साथ फर्स्ट टाइम था तो वही मैं बोला, यू आर एट स्टूडेंट लेवल, डोंट यस वरी। आप यस लोग स्टूडेंट हो तो इट इज यू नो इट विल टेक सम टाइम। नाउ आई एम अ यस फैकल्टी, तो मुझे सब चीजें पता है। इवन आई कैन चेक कि मुझे तुरंत ध्यान में आ गया बैंक ओडी टू बैंक टू कैपिटल रिडक्शन। नाउ एट यस स्टूडेंट लेवल इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वेर यू आर मेकिंग मिस्टेक। ठीक यस है, सर, और रिकॉलिंग में हो जाती है वहाँ पे। तो वो होगा, थोड़ा पेशेंस रखने का उस टाइम पे। एंट्री बाय एंट्री सोच के जाना है, एक एक एंट्री एंड डू पोस्टिंग बाय वन बाय वन एंट्री। सी योर बैलेंस शीट इज गोइंग टू टैली। इफ सपोज आई एम राइटिंग बैंक कोडी अकाउंट, सिर्फ बैंक कोडी वहां पे दिख जाता था, मेरा बैंक कोडी यस बैलेंस शीट में कंटिन्यू होता था। अदरवाइज आई माई बैलेंस शीट इज बिकॉज आई एम गिविंग टू इफेक्ट्स होगा तो बैलेंस शीट टैली होने वाला है। और वो टैली का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो 7वें आसमान पे लेके जाता है। यस आया सर। समझ में? तो यस वो सर। बहुत जरूरी है। आज आपको जो भी सी टुडे सेशन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन एग्जाम। टिल टुडे, टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड ईच एंड एवरी चैप्टर लॉजिकली। यस आज सर। हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। दिस इज अ सेकंड पार्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट पार्ट ये होता है कि फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड फुल चैप्टर। ओके, यस सर, कॉन्सेप्चुअली। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज रिक्वायर्ड। अभी यस सेकंड, अभी आप लोग नेक्स्ट स्टेज में हो। जैसे आप गेम्स भी खेलते हो तो स्टेज 1 कंप्लीटेड, नाउ वी आर इन स्टेज 2। स्टेज 2 है कि हमें वो चैप्टर हमें आना चाहिए बाय यूजिंग स्टॉप वॉच टेक्निक। Okay, ओके सर। for which chapter, which subject you will need this? Only accounts paper. And that is also 7 to 8 chapters are there in which you will need this stopwatch technique. Cash यस flow सर। है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ब्रांच अकाउंटिंग है, एमलगमेशन, अमेलगमेशन है। कंसोलिडेशन है। यस सर। So you will need this practice only in 4-5 papers. Okay, यस सर। तो ये ध्यान में रखो। नाउ सर आई हैव अ डाउट। बोलिए। सर पेपर में जो 30 मार्क्स का एमसीक्यूज आती है, तो सर उसका लेबल क्या रहता है? मींस प्रैक्टिकल रहता है या फिर थ्योरी बेस्ड रहता है? बिकॉज इंस्टीट्यूट तो वो रिलीज नहीं करती है क्वेश्चंस। कुछ नहीं होता है, पेपर हमने ऑलरेडी रिलीज किए हुए हैं। डोंट गेट कि नहीं करते हैं। वी सर हैव आईसीआई दैट के साइड केस, पे नहीं मिला मुझे केस पार्ट। बेस्ड। ठीक है, मैं आपको कुछ उसका शेयरिंग करूंगा। केस बेस्ड पेपर्स होते हैं, यस सर। तो यस वो पेपर आपको आप प्रॉपरली, ठीक है, आईसीआई के साइट पे नहीं मिला, बट इफ यू सर्च इट नो, कोई ना कोई आपको दे ही देगा। डोंट वरी कि वो मिलता ही है। तो फर्स्ट थिंग, देन ओके सर। क्वेश्चन पेपर्स हमारे पास रहते हैं, तो स्टूडेंट्स लोगों को भले मिलते नहीं रहेंगे, पर केस बेस्ड स्टडीज जो होते हैं ना, वो मिल जाते हैं। डोंट गेट कि नहीं मिलता, ऐसा नहीं होता है, वो मिल जाता है। एंड सेकंड थिंग, एमसीक्यूज का जो पैटर्न है, यू डोंट हैव टू
राइट की एक्सप्लेनेशन. सो यू जस्ट हैव टू फिल दैट आंसर्स. ओके, तो 30 यस मार्क्स. सर. हाँ, पर तो वो सर वही वहां पे टाइम का सेविंग हो जाता है, अगर सर क्वेश्चन में अगर लिंकेज हो जाता है तो उधर टाइम सेविंग होके हम इधर प्रैक्टिकल में वो टाइम लगा सकते हैं. देखो, केस बेस्ड पेपर कैसे सॉल्व करना है, वी विल कीप सम सेपरेट सेशन फॉर दैट. हमारा ओके सर, लास्ट थैंक के यू. 2-3 सेशंस हम लोग रखेंगे कि केस बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं. और हमारे पास आई थिंक हमने 35 प्लस कुछ तो क्वेश्चंस डाले हुए हैं केस बेस्ड के. तो आप वो देख लेना, आपको मिल जाएगा वो केस बेस्ड स्टडीज. ओके सर, थैंक यू. ओके. तो ओके. यस, तो वो भी है, पर वो उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का थरो नॉलेज लगेगा. थरो मतलब वी विल सी दैट, डोंट वरी. ओके, तो वो तो हम लोग, अभी आप मुझे बताओ, इन दिस 4 चैप्टर्स अभी आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पूरा हो गया ना अच्छे से? यस सर, यस सर. तो सेम हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी कल से शुरू करने वाले. नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू टेक इट ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. बट टुडे माय एक्चुअली सेशन आज एक तो एक्स्ट्रा मिला भी था, तो यस इसीलिए सर. आज मैं, सर 30th मार्च को भी यही चैप्टर है नहीं शेड्यूल नहीं, में अभी से मैं पूरा. चेंज करवाने बोलता हूँ. अजित सर चेंज कर देंगे वो. नेक्स्ट ओके इसमें सर. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ नाउ सम ये भी कर लेंगे. ओके ओके सर. सर, जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, लोड ज्यादा होगा, तो फिर आप प्रियांशी, आप मुझे एक बार ये कीजिए ना, अनम्यूट करके बोलिए ना, इतना पढ़ने से अच्छा है. सर कैन आई म्यूट माई सेल्फ? यस यस. ओके, थैंक प्रियांशी, यू. कैन यू रेज योर हैंड? हम्म, बोलिए प्रियांशी. Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा. सर माय डाउट इज दैट कि जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, मतलब जैसे मई जून जुलाई तक, तो फिर जैसे एफएम डीटी इन सब के सर जैसे प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना बहुत जैसे लेंदी लेंदी होता जाएगा, तो सर इतना टाइम कैसे मिलेगा हमें? और प्लस जैसे ये क्वेश्चन में अभी हमें 40 मिनट्स लगे हैं, हम जैसे कवर करके वापस जैसे 35 to 40 मिनट्स की प्रैक्टिस कर करके हम प्रैक्टिस तो करेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द सम मंथ्स सर फिर कैसे मतलब वापस हम प्रैक्टिस कर पाएंगे इतना सारा? फिर वापस से टाइम गुड लगेगा क्वेश्चन. ये देखो सब. बेटा, इसीलिए सीए कोर्स ये वनडे का कोर्स है क्या? नो नहीं. सर. अभी देखो, व्हेन यू आर इन द लर्निंग स्टेज, तो आपको क्या करना है, मैं ऑलवेज आपको बोलता हूं, यू हैव टू मेंटेन दैट कॉन्सेप्ट बुक. कॉन्सेप्ट बुक क्या करती है? कॉन्सेप्ट बुक आपको बाद में कभी भी वो चैप्टर रिवाइज करना है. सी, वी आर ह्यूमन बींग्स, नॉट कंप्यूटर्स. तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वी हैव टू रिकॉल इट एवरी डे, और एटलीस्ट वीक वीक में वंस वी हैव टू रिवाइज एवरीथिंग. ठीक है, वंस अ वीक यू हैव टू रिवाइज एवरीथिंग. सो यू हैव टू मेंटेन दैट 100 पेजेस का बुक विच विल गिव यू recap technique. Okay. Abhi, you don't have to solve each and every question of internal reconstruction. Now, suppose if you open that notebook, what you will get in that? First, you will get methods of internal reconstruction. If buyback, so you will get 3 tests. For example, suppose if I forgot everything, okay, after 1 month, 2 months, but if I open that short notebook, आप ही मुझे बताओ, are you able to recall it everything? हो ही जाएगा यस ना. सर. Now, second step, when you are learning that chapter, at that time only you solve some questions properly, all questions properly in your notebook, that all study material question, all past questions, all test your knowledge questions, you do it in your notebook, and you use this technique. You choose only any 5 questions, one is of 20 marks, one is of 15 marks, one is of 10 marks, and you write it in your notebook by using stopwatch technique. See, now stopwatch technique, I am not going to take it in class because we have only 70 sessions. But आई एम थैंकफुल टू बोर्ड ऑफ स्टडीज, आशा मैम और हमारे अजित सर जो हमारा स्केड्यूल ड्रॉ करते हैं. तो आशा मैम ने ये एक टाइम रखा हमारे लिए कि भाई एक एक्स्ट्रा दिन दिया, तो नाउ यू अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व इट इन दी एग्जाम. इन देखो, मतलब इट्स नॉट वेरी सिंपल कि सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो यू आर गोइंग टू सॉल्व इट इन एग्जाम. देखा ना आज कितना टाइम लगा. यस सर. अभी आप सोचे मेरे साथ 40 मिनट लगे हैं, अब खुद से तो 1-1.5 घंटा जाने वाला है. वही मैं सोच रही थी सर, जैसे वो रोजी जी ने कहा था कि उन्हें भी इतना टाइम लग गया, तो आपके हाँ साथ तो 40 मिनट्स लगा है, तो हमें तो 1 घंटा आराम से लगेगा. हाँ, तो एक काम हमेशा कीजिए कि जब भी सॉल्व कर रहे हो ना,
तो वो मत सोचिए कि मेरा कितना मिनट में होने वाला है. ऑलवेज ट्राई टू थिंक कि ये मेरा जल्दी खत्म हो जाए. और जब सॉल्व कर रहे हो ना एक बार, तो हैंडराइटिंग पे ध्यान मत देना. कुछ स्टूडेंट्स को अच्छा हैंडराइटिंग निकालने की एक बुरी आदत होती है. नहीं, इट्स इन रीडेबल फॉर्मेट. ठीक है, मेरा हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है, आई नो. नॉट रनिंग भी नहीं है, कर्सिव हैंडराइटिंग भी नहीं है, तो फिर भी इट इज रीडेबल. मतलब कोई भी इसको मार्क्स तो दे ही देगा. ठीक है, बहुत अच्छा नहीं भी होगा तो भी ओके. सो ये चीज आपको ध्यान में रखना है. और 40 का 45 मिनट्स वो सॉल्व करते टाइम, बट उससे ज्यादा कर रहे हो तो सेम क्वेश्चन यू सॉल्व. सो वेन यू विल गेट ग्रीप ओवर दैट बाय सॉल्विंग द सेम. देखो, विराट कोहली सेम बॉल को 50 बार खेलता है. जब उसका कनेक्ट नहीं हो रहा था बॉल, तो वो सेम बॉल को रोज डालने के लिए बोलता है कि उतनी प्रैक्टिस कर रहा है. तो हमें सेम चीज करनी है कि हमारा 40 मिनट्स में नहीं हो रहा है ना, सर ने टाइम दिया, वो क्वेश्चन ही वापस सॉल्व करेंगे. कभी ना कभी तो 40 मिनट्स का 42 मिनट्स में होगा, 43 मिनट्स में होगा. इससे नीचे नहीं जा सकते हैं. ठीक है, 42 मिनट्स एग्जाम में कुछ तो कर लेंगे आप लोग. पर एटलीस्ट स्टूडेंट का क्या होता है मैं आपको बताता हूं. स्टूडेंट जाते हैं डायरेक्टली प्रियांशी एग्जाम में, और वहां पे वो डायरेक्ट 40 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. वो नहीं होगा. अंडरस्टैंड दैट. एक दिन में ये प्रोसेस नहीं होने वाला है. यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट विद इन वन डे. इतना ध्यान में रखो. ओके. यस सर. यस. अशोक जी, एक बार व्हाट्सएप की लिंक शेयर कर दीजिए. कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है. यस. चलिए, और कुछ क्वेश्चंस यू हैव? Otherwise, we are going to solve one question of cash flow statement now. Okay, one question of buyback we will first solve, and after buyback, beta, we will solve. We will take a break. Break के बाद हम लोग one question of cash flow statement. Okay. Question 5 explain कीजिए. Question 5 of what बेटा? Okay, this question you won't get it. अच्छा, ये क्वेश्चन नहीं आया क्या? अच्छा, ठीक है. तो बिफोर ब्रेक वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 5 देन. ओके चिरंदीप. ठीक है, चिरंदीप सिंह 0.6 एंड 0.7. ओके. हाँ अमन, बोलिए अमन. Yes, sir. Same adjustment. 6 and Same 7 adjustment. adjustment. ठीक है बेटा, Yes. कोई बात नहीं. विल डू दैट. ये क्वेश्चन कब आया था? 2015. बहुत पहले आया था ये क्वेश्चन. ठीक है, चलो. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन 5. आई वोंट राइट इट बिकॉज नाउ टाइम इज लेस बेटा. तो हम लोग उधर के उधर ही करेंगे. 16 मार्क का क्वेश्चन था ये. Yes, sir. सर पूरा करें या फिर आप एडजस्टमेंट 6 ही से बताओगे या फिर पूरा? वही एडजस्टमेंट बताओ क्या फिर? यस सर, वही बाकी सब इजी है. विच एडजस्टमेंट? 6 7 और उसी पर बेस्ड है 9 10, तो 9 10 भी नहीं हो पाया. चलो रीड इट. B 6% debenture holders agreed to take over the Chennai works at 425,000 and to accept an allotment of What is 1,500 Chennai equities. work? Chennai work is your property, plant and equipment. Say yes or no. Yes sir. हाँ. So 6% debentures. B 6%. Now what is B 6%? A is a category and B is a category. Understood? Yes sir. तो B category के 6% debentures. What is the value of that? So you can write it in an exam. 3,50,000. Okay. Yes sir. They agree to take over. Chennai works at 425 हाँ. and And to to accept. an allotment of 1,500 equity shares of Piston each at par. So 1,50,000 and 4,25,000. Okay. Upon their forming company called GR Limited, which is to take over the Chennai works, they allotted 9,000 equity shares of Piston each fully paid at par to Star Limited. Okay. Yes. So debenture holders, they allotted 9,000 equity shares upon their forming a company called Zia Limited, and they allotted 9,000 equity shares of rupees 10 each, fully paid up at par to Star Limited. Star Limited अपनी कंपनी है क्या? Yes sir, Star Limited अपनी कंपनी. ठीक है. सी
Now, in this question, what you have to do? Debenture holders. What they will take? So they are taking Chennai Works at 425. Chennai Works. So what is their value? 3,50,000. Yes. They are taking the property of 425. 425. And equity shares 1,500. Equity share capital of our company. Yes, sir. 15,000. Correct? Hai? Yes, sir. And what they are giving us? Equity shares in Zia Limited. Are debenture holders giving us equity shares in Zia Limited? So what is the balance of this? 425? 440, right side. 440 and 440. See, debenture holders are giving us this 90,000 shares. Okay. So we are getting equity shares in Zia Limited 90,000. To debenture holders, they are giving us. So they are our creditors. They are our creditors. Because they are giving us this amount, no? Yes, sir. Plus, what is their amount? B 6% debentures. Debit 350. 3,50,000. To again debenture holders 3,50,000. And debenture holders, what they are taking from us? Freehold property and equity share capital. 440. Yes, sir. 440, 350, 90. 425 and 15. 425 and 15. Sorry. Now getting this answer. 3 entries you have to pass. Equity shares, who are giving us this equity shares in Zia Limited? Debenture holders are giving. See, very, very important adjustment. This is very new adjustment, unique adjustment. Debenture holders are taking, so we are getting equity shares. So equity shares comes in and debenture holders are our creditors. We have to pay them. तो डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स. सी बेटा दिस एंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप एक बार वापस एंट्री बोलिए. पहली एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर. इक्विटी शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल को कभी डेबिट बैलेंस होता है क्या माय डियर? इट इज इन्वेस्टमेंट. इक्विटी शेयर्स इन जिया लिमिटेड. इक्विटी शेयर्स इन जिया लिमिटेड. इट इज इन्वेस्टमेंट. सी, इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट. Equity shares in Zia Limited is a real account. Debit what comes in, and equity share capital is a personal account. Credit the creditor. Okay, sir. हाँ, थोड़ा लॉजिकली जाइए बेटा अमन. हाँ, बोलिए. वर्ड चेंज हो गया था. Equity shares in Zia Limited account debit to debenture holder. We have to pay them, so they are our creditors. Okay. There are creditors. Will pay them. Then second entry. The second entry will be. डिबेंचर्स को कैंसिल करो. 6% डिबेंचर्स को. 6% B 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स. दे आर आवर क्रेडिटर्स. वी हैव ओपन डिबेंचर होल्डर्स, नो? Yes, sir. And what we are giving to them? Debenture holders now receiver. Debenture holders are now receiver. So debenture holders account debit 440 to Chennai Works 425 to equity share capital 15,000. Easy? Easy, sir. हो गया. वो मेरे को बस वही 90,000 जिया लिमिटेड वाला ही समझ नहीं आ रहा था. आप लोगों को है ना चित्र बनाना पड़ेगा. दिस ड्राइंग विल हेल्प यू आउट. Okay, whenever the exam ka question is very complicated, make sure that you will prepare this diagrammatic form. It's very important. When you write it in this way, no, it will be very easy. ये ध्यान में रखना. Okay? Easy or not? Yes, sir. Now understood. Now understood. Next adjustment. Read it. Chennai Workmen Compensation Fund disclosed that there were actual liabilities of 1,000 only. As a consequence, the investment of the fund were realized to the extent of the balance, and their investments were sold at a profit of 10% on book value, and the proceeds were utilized for payment of the creditors.
Chennai, what Workman is the Compensation liability? Fund. Workman Compensation Fund, where it is 5,000. But Yes, sir. actual liability is what? 1,000. 1,000. So liability is reduced by 4,000. 4,000. Correct. So liability reduced. Liability को कौन सा balance होता है? Credit यहाँ पर डेबिट देंगे फिर. Very good. So Workman Compensation Fund account debit to capital reduction. Okay. To 4,000 capital amount. reduction. कितना? 4,000. 4,000. Correct. Yes, sir. And as a consequences, The investment of the fund were realized to the extent of the balance. the investment of the fund were realized to the extent of balance. So what is the balance in the investment? 15,000. And Sold at a what is profit of the 10%. profit of 10%? So 15 कितना profit हुआ? 1,500. No. Now see, actual liability is 1,000 only. And as a consequences, the investment of the fund were realized to the extent of the balance. Now actual which liability balance? is 1,000. So you will keep 1,000 in the investment account. In which account you will keep the balance? In investment account. हाँ, तो 14,000. investment account. तो investment account में 1,000 balance we will keep. Balance keep. Okay. So what is the sold value? 14,000 के बेचेंगे. And you At a sold it profit at 10% extra. So 15,400 is your selling price. Okay, sir. Sir, how I got to know this? It's very difficult. You will need expert guidance for this question. Okay. So as a consequences, one more time, the investment of the fund were realized to the extent of the balance. To the extent of balance means 1,000 is my liability, so I will keep 1,000 in my workman compensation investment account because I have to pay 1,000 rupees in future, no? Yes, sir. So that fund, I will keep fund on the liability side and investment on the asset side. Same balance. Okay, 1,000, 1,000. And remaining 14,000 I sold at extra 10%. So what is Got the it, selling sir. price? 14,400. 14,000 plus 10%. 15,400. 15,400, na? 14,000 Yes, sir. plus 1,400. वही कह रहा हूँ सर. 14,000 plus 10%, 15,400. राजवीर 14,400 कैसे आएगा बेटा? 15,400 आएगा ना बेटा. 1,400 रुपया प्रॉफिट हुआ. IMP adjustment. And then trade payable account debit to bank 15,400. Got the concept? I got the concept or not? Yes, sir. और क्या है डिफिकल्ट? 8 नंबर, चेन्नई वर्क्स कंप्लीटली रिटर्न ऑफ. चेन्नई वर्क्स जो बचा उसको रिटर्न ऑफ कर देंगे कैपिटल रिडक्शन से. तो चेन्नई वर्क्स में जो भी बैलेंस है दैट विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ. सो व्हाट इज द बैलेंस? हमने अभी भी कुछ किया ना. 350. 425 तो गया ना. ये सर वही 350 बचेगा. तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू चेन्नई वर्क्स 350. यस, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू चेन्नई वर्क 350. और कुछ सर उसी पर बेस 10 भी था शायद से. हाँ, वो कैपिटल रिडक्शन सर फाइंड आउट करना था. अब हो जाएगा. And capital reduction 2/3 is to write off the value of the Bombay works. So whatever the balance in the capital reduction, uska 2/3 you will write to PPE, and then balancing you will transfer to capital reserve. So first you have to calculate capital reduction account. तो मैंने आंसर प्रोवाइड किया है क्या इसका? नो सर. So I will provide you the answer. Say journal entries and see, tell me all difficult question numbers, beta. Any one of you having thoda sa difficult adjustment? Have you noted all difficult questions?
I'm very happy, Aman. You are solving each and every question. Sir, I solved every question you said. Yes, You beta. gave. Very good. 5 Very to good, 12 beta. पूरा कर दिया. Very good. So, which questions are difficult? Those who solved it. See, beta, in CA course, you need this dedication. When after completion of that chapter, you have to solve some past examination questions. I have provided you list also. इससे ज़्यादा BOS can't do anything, हाँ बेटा. We are giving you best things. कि हम लोग आपको पूरा का पूरा ये दे रहे हैं. हाँ जी. बोले हर्षदा. So question number 11, the adjustment number 7 and 9. Question number 11. We solved it, no? अभी वही तो किया शायद से कि नहीं? 12 नहीं था, अभी that 12 was किया था. 12. 12 था. ये भी शायद से सॉल्व किया है. सर आपने कराया था पहले इसको. Even the balance sheet is tallied with 16 lakhs. ये सॉल्व करवाया बेटा. A secured loan 4,80,000 being interest 12% is to be obtained by mortgage tangible fixed asset for bank OD. तो लोन लेना है बेटा ओनली बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन. अंडरस्टूड. किधर गए? बेटा अनम्यूट योर सेल्फ. ये मैंने कराया था बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन एंड देन बैंक ओडी अकाउंट डेबिट टू बैंक 2 lakhs. वेरी सिंपल. बैंक टू बैंक लोन एंड बैंक ओडी टू बैंक. ये कराया था ना शायद से. यस सर. मैं भी था साथ में. आप आ रहे थे तो याद नहीं. अच्छा आपने ही बताया था क्या? ओके. Yes. कौन फिर से मैंने खुद डिफिकल्ट से. क्वेश्चन में लिस्ट कोई भेजेगा क्या मुझे? ऑल डिफिकल्ट क्वेश्चंस टुगेदर. Yes. And see this different type of adjustment, no? Discussion will also help you in exam. All this, other students, if they discuss it in the class, you also can mark it. कि ये question में though you have not solved due to some other commitments, but if you have not solved it also, better please mark this adjustment. Yes. Aman, और कोई difficult question था? नहीं सर बाकी सब इजी थे. बस वो आंसर की मिल जाता तो मैं मिला लेता बस. चेन्नई वर्क वाला मस्त क्वेश्चन था. मैं आशा मैम को बोलता हूँ बाद में वो क्वेश्चन अपडेट कर दो. और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन की लिस्ट भेज दो ना मुझे. हम लोग क्या करेंगे न्यू स्टडी मैट में वो इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे. आई लाइक दैट क्वेश्चन. तो हमारा मैट भी बहुत अच्छा होगा. कुछ बोलने वाले हो अमन? कोई डिफिकल्ट लिस्ट? सर फाइंड करना पड़ेगा ना फिर. ऐसा अभी तो है नहीं मेरे पास. कोई अदर स्टूडेंट्स हु हैड रिटन ऑल दिस डिफिकल्ट एडजस्टमेंट? क्या इतना हमारे इधर कोई नहीं करता है? यस गुड. ठीक है. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस बेटा अमन अबाउट सॉल्विंग इन टाइम? क्या आप ऐसे ही करते हो? सर अभी मैंने स्टॉप वॉच से किया नहीं. बट जैसे कि मैं टाइम देख के ही बैठता हूँ तो इन टाइम ही हो जाता है. 5-10 मिनट इधर उधर लेकिन इन टाइम ही हो जाता है मेरा. बट अभी आप मेरा राइटिंग प्रैक्टिस करोगे स्पीड. ना? हाँ सर मैं कर लूंगा. मेरा राइटिंग स्पीड नॉर्मली भी सही है तो हो ही जाता है मेरा. ओके ठीक है. चलो. सो कैन वी टेक ब्रेक? यस सर. सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दी चेन्नई वर्क एडजस्टमेंट अगेन? नो बेटा प्लीज वॉच इट अगेन. भूमि प्लीज वॉच दिस. ओके. मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है तो आप लोग एक बार देखो. वी हैव नेक्स्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन. तो अदरवाइज विल डू वन थिंग. विल सॉल्व स्टार्ट विथ फ्रेश चैप्टर टुडे. मैं एक बार ऐसे ही प्रैक्टिस ले लेता हूँ लास्ट केस में. ठीक है. सो विल स्टार्ट विथ द चैप्टर नंबर 2. ठीक है बेटा. सो आफ्टर ब्रेक वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 2 8:45 को. तो 8:45 को हम लोग मिलते हैं. टेक अ ब्रेक. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ फ्रेश चैप्टर तो डू नॉट मिस इट. चलो स्टार्ट. ब्रेक दे देना अशोक जी.
I am going to start with the chapter called as Financial Statements and Framework for Preparation and Presentation of Financial Statements, because we have already completed internal reconstruction. So without wasting time, we will finish it. Now, first thing, financial statements. Financial statements, sir, we already solved this. Balance sheet, profit and loss account, even cash flow statements, notes to accounts. Now, notes to accounts, we will see it in accounting standards, what we are going to present in our financial statements. I don't think now anyone has problem about balance sheet items, profit and loss items, because we know balance sheet pro forma already. Almas already answered it in the morning. Balance sheet, equity and liability, shareholder fund, share capital, reserve surplus, non-current liability, long-term borrowings, deferred tax liability, other long-term liability, long-term provisions, current liability, short-term borrowing, trade payable, other current liability, short-term provisions. Assets, non-current assets, property, plant and equipment, intangible assets, capital WIP, intangible assets under development, non-current investment, deferred tax assets, long-term loans and advances, other non-current assets, current assets, CIT, CSO, current investment, inventory, trade receivable, cash and cash equivalent, short-term loans and advances, other current assets. Friends, in P&L, we have revenue from operations, other income, total income. Then we have material consumed, changes in inventory, employee benefit expenses, interest and finance cost. Then other expenses, profit before tax. So you already know full pro forma. Now, while preparation of your financial statements, your balance sheet and profit and loss account, what is framework? Framework means you are getting help while preparation of financial statements to assist enterprise in preparation of financial statements. So we are getting self-help while preparation of financial statement, and this must be in compliance with accounting standards. Okay, so this is the purpose of this framework. Framework means guideline. Guideline you are getting. Accounting standard in board in task of development of review of accounting standards. So it helps enterprise also, even accounting standard board. Accounting standard board is the body constituted by the Institute of Chartered Accountants of India. Okay, so that accounting standard board, what is the benefit of that? Benefit is that they will get the guidance while preparation or introduction of any accounting standards. It helps board also, it helps auditors. Auditors in forming the opinion of the financial statements. Users in the interpretation. And those who are interested to work with the accounting standard board. So these are the some purpose of the framework. Framework is of two types. It applies to general purpose. General means for external users. And it is also applicable for special purpose like tax purpose. We will need this framework. Framework means this help which we are getting. I already explained you the components of the financial statements. Now who are users? Who are going to use these financial statements? Investors, employees, lenders who is giving you a loan, creditors who is giving you goods, customer, government and public. While investing in some companies, first I will read the financial statements of that company. And if that financial statements are not prepared properly, it is of no use. So friends, my objective is to give help to the users. And you understood who are users.
In first accounting standard, we are going to see this. This is the disclosure accounting standard, that your fundamental assumptions while preparing any books of accounts, you prepare these financial statements based on 3 assumption gas. But gas का spelling थोड़ा अलग है. It is GAC. Going concern, accrual, and consistency. Now we have one problem based on the going concern. So first we will solve that problem. If going concern concept is applicable, if going concern concept is not applicable, how are you going to prepare books of accounts? Okay. So friends, what is going concern? We will solve one question. Wait. What is accrual? If someone asks you what is accrual, now accrual, I think at intermediate level, everyone knows what is the accrual concept. Accrual is the difference between cash concept and, see, I will give you example, so it will be very easy for you. If salary I'm paying at the beginning of next month or at the middle of the next month, when I'm paying the salary I'm paying in the middle of the next month. Why? Because if I paid salary on 31st or 30th of that month end, it might happen by taking that salary, my employee will leave my company. So friends, I'm not paying salary in the same month. I'm paying salary on 15. So what happens of last month's salary if I'm paying, so at least I will have 15 days ka security of that month कि he will not leave my company without any intimation. So normally this is a policy. Some companies are paying on because they have trust on their employees, so they can pay. See, now I have some laborers in my business, so I cannot trust them because sometimes it might happen because they are laborers. Labor class थोड़ा अलग होता है, तो हमें 15 दिन का सैलरी रखना पड़ता है. भाई छोड़ के गया तो जा, पर 15 दिन की सैलरी. और लेबर क्लास ये पैसा नहीं छोड़ता है, उनको भी डर लगता है क्योंकि उनका पेट हाथ के ऊपर होता है. So they will not leave that amount. So what happens now? Try to understand. So in this year, from April to March, financial year starts from April, ends on March. When I am paying salary, okay, let's understand. When I am paying salary, I will pay salary in the month of March का salary I will pay in the month of April. April का salary I will pay it in the month of May. Understood the concept? ठीक है. So salary when I am paying March का salary I am paying in the month of April. April का May, May का June, June का July. तो बेटा like this I am going to pay salary. I love phone. So during the year, how many months ka I am paying the salary beta? I am paying the salary of 11 months. And March महीने का salary, I will pay it in the month of April. So this is outstanding. As per cash concept, I will record in P&L and balance sheet salary of 11 months. Because I paid only 11 months ka salary. And cash goes down by 11 months. But this is not allowed as per cash concept. Accrual concept we have to follow. Accounting does not allow cash concept. In non-profit organization, normally we follow cash concept. Actually, AS1 not allows it. But see, many non-profit organizations, they are maintaining their books based on the receipt and payment. I've done many audits of non-profit organization.
Actually, I told them many times you follow accrual concept, but normally they record whatever receipts and payments based on that books of accounts. But this is not the actually we should follow. So what is the accrual concept of accounting? Accrual concept of accounting talks about profit and loss account. I will record it for 12 months. I will record salary of 12 months. Sir, but you paid only for 11 months. Yes, I know. As per my voucher, I have vouchers of only 11 months on which my laborers have signed. Salary slip होगा तो अलग बात है. But I am talking about wages because we have vouchers for that. On voucher, how many? On that voucher, how many signs are there? Only of 11 months. Because 1 month ka salary I have not yet paid. And that 1 month ka salary, I am calling it as outstanding salary or salary payable or provision for salary of 1 month. And therefore, in 11-12 standard, you as per trial balance, salary is off. If trial balance is given on debit and credit, this salary is given in the trial balances of only 11 months. As per voucher, my accountant has passed that entries as per voucher for how many months? 11 months. And salary outstanding of 1 month is called as adjustment. Adjustment means what? For which you do not have any supporting. That due to this accounting concept, we pass these adjustment entries. We do not have any supporting for salary payable. We do not have any supporting for depreciation. We do not have any supporting for closing stock. So these are the adjustments. And what is trial balance? Trial balance means for which we have some supporting from which we are doing journal entries, ledger, trial balance, and then P&L and balance sheet. So salary is the adjustment for outstanding of 1 month. So as a chartered accountant, I will record that adjustment. Accountant will record only 11 months ka salary. Chartered accountant will help him. He don't record only 11 months. Chartered accountant will tell him the accounting standard 1. Accounting standard 1 is the, as per disclosure of accounting policy, you cannot record salary of only 11 months. You have to record 12 months ka salary, and therefore you have to pass. We pass entry in 12th standard. We add 1 month ka salary over here and showing liability side pe 1 month. Why we are following this concept? Due to accrual concept of account. My dear students, April to March, when we are recording these entries, we follow accrual concept of accounting. I hope you are very clear with the concept of cash versus accrual. In accrual concept, we have 2 entries for, we already have seen all these entries. We have 2 entries for expenses. One is payable and one is prepaid. Prepaid means we paid it in advance. And in income, we have 2 entries. One is receivable and one is received in advance. So all these 4 entries we pass due to concept of accrual in accounting. Otherwise, if you follow cash concept, these entries are not there in your cash concept, and which is not allowed as per accounting standard 1. Very clear? Easy to understand? Okay? तो बेटा आप लोगों को इतना ही याद रखना है कि हम लोग जो फॉलो करने वाले हैं वो कैश कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाले नहीं है, हम लोग एक्चुअल कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाले हैं. कैश कॉन्सेप्ट क्यों फॉलो नहीं किया जाता है? बिकॉज ये अलाउड ही नहीं है एज पर अकाउंट्स. ओके, अंडरस्टूड? Disclosure 1 accounting policy, it is not allowed. Now, so anyone has difficulty in accrual concept? So everyone is clear. In accrual concept, we record books of accounts from April 1 to 31st of March. If you have any difficulty in understanding of accrual concept, you can ask me. Everyone is very clear about accrual concept of accounting? Hi Anna, crystal clear, very good. Smriti बोल रही है. Other students can answer. Rajveer, very good. Bhumika, yes beta, very good. Now we are moving to going concern concept. But for going concern concept, I will first explain you through it illustration. Now what is the illustration? Come to illustration number
See, purpose, status, components. I have already taken all these users. And now come to illustration number 1 of going concern. Who wants to read? Raise your hand. This is very simple chapter. Now, beta, we already have done all difficult topics, internal reconstruction, buyback. So this chapter is very simple. C category chapter as compared to other chapters. ठीक है? चलो. Yes, beta, Priya Mishra. Unmute Good morning, yourself. sir. Good morning, sir. Good morning, beta. Uh, Chalo. Shall I start? Okay. Yes. Balance sheet of a trader on 31st March 2000 is given below. Liabilities, capital, profit and loss account, 10% loan, trade payables, assets, property, plant, equipment, stock, trade receivables, deferred expenditure, bank. Additional information. Now, The remaining assume, 1 minute. If going concept is followed and if not followed. Beta, if we are following going concern, we can continue with the cost model. We can continue. We have either or option. In accounting standard 10, I am going to explain you what is the revaluation model, not now. But we have two approaches while passing any entry. So going concern, if we are following, we have two approaches. One is cost and one is revaluation. But going concern means your business is not going to continue in the future. You are going to curtail your operation, cut down your operations. In that case, you will follow net realizable value concept. Which concept you are going to follow? Net realizable value means you are showing your assets not at cost. You are showing your assets at selling price minus selling expenses. What is net realizable value? Net realizable value means selling price minus selling expenses. Got the concept? Yes, sir. Selling price minus selling expenses is called as net realizable value. If you are following your going concern concept, I will continue with the cost approach. Now, while solving this question, you are asked to prepare your financial statements, profit and loss account and balance sheet by using both concepts. One is using going concern. You can check it. And assuming not going concern. 5 marks ka question will be there. 5 marks ka question aega. And in exam, they won't ask you both approaches. They can ask you only not assuming going concern. So you will follow only NRV approach. Which approach you are following? NRV, net realizable. And if they ask you about going concern is assume, then? At cost. At cost. Very good. Understood the difference? So yes, you can write over there. Assuming going concern means at cost. And not assuming going concern means? At NRV. Note down. Do you have study material? Priya? Yes, sir. Yes, sir. Note it down. Yes. Done. Chalo. Now tell me. The remaining life of the property, plant and equipment is 5 years. What is the remaining life of the asset? 5 years. 5 years. And what is the pattern of use of that asset? Even. Is even. Means. So, straight line method. 65,000 divided by 5 years. What is the formula of depreciation, beta? Because you are direct entry student or foundation yes, sir, student? direct entry. Direct entry student. So depreciation formula is for straight line, cost minus salvage value. Salvage value upon number of years. Yeah. Useful life. Very good. Divided by useful life. Now, why this formula? We will see it in accounting standard 10.
property, plant and equipment. I will teach you from very basics. Don't worry. So what is my depreciation value, my dear? Sir, 13,000. 13,000. So what is the book value of that asset? Book value 65,000 minus 30,000. 52,000. Say yes or no. Yes, sir. 65 sir. minus 13. Yes, sir. 13,000. 52,000. And net realizable value of this asset is 60,000. So if not followed, I will write 60,000. Yes, Okay, sir. easy. Yes, sir. Here I will prepare trading and P&L also. Cost, NRV. Cost, NRV. So what is the depreciation of this asset as per cost? 65 to 52. So what is the difference? 13,000. So I will record over here 13,000. And if NRV 65 ka 60, so what is the depreciation value? 5,000. Very good. Noted? Yes, sir. Chalo, let's move to next amount. Trader purchases 4 lakhs and 4.5 lakhs sales. So can I write purchases over here? Who purchases by sales? Very good. By sales. So what is the purchases value? 4 lakh. 4 lakh. Both side? Yes, sir. And sales? Both side. 4.5. 4,50,000. 4,50,000. Any difficulty? No, sir. So second adjustment also over. Third adjustment. The cost and NRV of stock on 31st March were 32,000 and 40,000. So this is a closing stock. Closing stock. And Can I record over here closing stock? By closing stock. As per Cost is 32,000 and 40,000 in NRV. And same stock I will write over here. Yes, sir. And can I write opening stock of last year is 30,000? Say yes or no. And NRV Yes, I don't know because I don't know whether there will be adjustment. So we'll do it afterwards. Yes, sir. So opening stock, I will take it from the last year ka balance sheet. Yes, sir. That will be 30,000. Any difficulty in understanding this? No, sir. No. Chalo. Second adjustment we have completed. Third also over. Expenses including interest. Amounted to 14,900. 14,900. So I will write directly expenses. I will write directly expenses. How much expenses? 14,900. तो सर बाइफरकेट करके दिखाना पड़ेगा एग्जाम में. You can show it directly. You can bifurcate it. Don't worry. तो किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा. Yes, sir. 14,900. 14,900. Your net profit won't get affected. So expenses 14,900. Correct? Next. Deferred expenses. Actually now you can write over there. मैंने मैम को बोला था development expenditure. Deferred के जगह पे क्या लिख दो? Development expenditure. Because now deferred concept is no more. As per accounting standard 26, we have only one expenditure to amortize it, to defer it, and that is development expenditure. Okay. All other expenses we have to write it up to profit and loss account as per S26. Okay. Okay. Yes. So tell me. Now what is the development expenditure? It's 10,000. So and you have to write it off to in 4 years. 4 years. Amortize means what? Amortize means transfer to P&L. Yeah. Amortize means divide it over 4 years. Amortize means depreciate is for tangible assets and amortization is for intangible asset. Okay. Yes, sir. So development is an intangible asset. So we have to divide it over 4 years. 2,500 will be the. Okay. So what is the balance in the deferred expenditure here? 7,500. And I will write over here to development expenditure 2,500. Got the concept?
Yes, sir. हाँ. And what is the development expenditure in case of NRV? It will be Zero. zero because I'm not going to Zero. continue with the asset now. I'm going to Yes, close sir. down my business. So I will continue with zero in Zero. case of NRV. Okay. Yes, sir. So NRV, as per NRV, balance in asset is zero. So can I call full 10,000 I have written off? Full 10,000 I have written off. Can I call it as 10,000 का 10,000 पूरा का पूरा P&L में गया? Yes, sir. Say yes or no? Yes, sir. Very good. Chalo. Next one. Sir, in case of assets also, it might happen that पूरा का पूरा हम लोग like over 4 years हम लोग depreciate करके dispose off कर देते हैं asset, तो NRV में फिर पूरी cost लेंगे asset की like 65,000. नहीं समझा, वापस एक बार. Sir, in case of asset like property, plant and equipment, अगर उसमें ये लिखा होता कि हम 4 साल में उसको पूरा यूज करके डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, तो नहीं, हमें फिर हमने उसकी सेलिंग प्राइस ली रहती ना. अभी इसका सेलिंग प्राइस जीरो है. हमने एसेट का क्या लिया? वी हैव टेकन सेलिंग प्राइस ऑफ दैट एसेट, नो 60,000. यस सर. सर नहीं, अगर सेलिंग प्राइस नहीं गिवन और हमें बस क्या इतना आप बोले कि एसेट थोड़ी फेंक दोगे? जीरो होगा क्या? देंगे ना, सेलिंग प्राइस तो होगी ना एसेट की. आपका मोबाइल का कुछ तो वैल्यू होगा क्या? नहीं होगा. यस सर. हाँ, तो डेफर्ड एक्सपेंडिचर का कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में. ओके सर. अंडरस्टूड? यस सर. Priyanka will take your query at the end. By closing stock, yes. Then trade receivable, 25,000 of which 2,000 is doubtful. So can I show 23,000 over here? Out of that 22,000 is doubtful. Say yes or no, beta. Priyanka, किधर गई? Raise your hand. Where are you? म्यूट कर दिया आपने. यस सर. ओके, कंटिन्यू करना चाहती हो या बस? नहीं सर, कंटिन्यू करूंगी. हाँ, तो एकदम म्यूट क्यों कर दिया आपने? म्यूट किया तो मुझे अनम्यूट करना पड़ता है. हाँ, 25,000. टेल मी. 25,000, 2,000 is doubtful. So what is the value of that debtors? सर हमारे पास वैल्यू ऑफ डेटर्स है 20,000. 23,000. 2,000 is only ये ना. 20,000 is of last year, my dear. 25,000 in the current year, and out of 25,000, 2,000 is doubtful. So how much amount I'm going to show it in the profit and loss account? 23,000. 23,000 I'm going to show P&L. P&L में नहीं, 23,000 in balance sheet and 2,000 in P&L. Okay sir. 23,000 in the balance sheet, no? Yes sir, yes sir. हाँ, तो ऐसे क्या कर रहे हो? And collection of another 4,000 depends on successful reinstallation of certain products supplied to customer. Now this is IMP. So that customer is talking about कि first you reinstall this product and then only I will pay you. If you are going to cut down your business, are you going to install it? No sir. ये No. इसी साल हमारा खत्म हो जाएगा. So ये again we will deduct this 4,000 only in NRV because we are not going to continue with the business, and therefore it is not possible for successful reinstallation, and therefore I will deduct this 4,000. So here in NRV I will deduct total 6,000. You are getting this concept? Yes sir. 4,000 reinstallation का and 2,000 जो हमारा doubtful debt है. हाँ, तो 19,000 I will continue because I'm not going to reinstall that product once again. So in case of NRV, because I want to cut down my business, I want to discontinue my business. Going concern concept is not applicable, and therefore what I will do, I will deduct 4,000 from that. Got the concept? Yes sir.
सारा बैलेंस इसी साल हम खत्म कर देंगे नोट एनआरवी में, वेरी इसीलिए हम 6,000 माइनस कर देंगे अपना। वेरी गुड. Closing trade payable is 12,000. But you are going to settle it at 5%. When you will settle it, when you will continue with the going concern or not continuing with the going concern? Not continue with the going concern. And in that case, I have to pay only 11,400. 400. Okay. So Yes, what sir. is my benefit for that by discount received? 600 ka. 600 in case of NRV only. Got the concept? Yes, sir. Easy or difficult? Easy, sir. Okay. Cash balance 37,100. So cash and bank balance, I will continue with the 37,100. Okay. Yes, sir. And there is a early payment of penalty of loan 2,500. So if I continue with this, my liability will be 35,000. Yes, sir. और डिसकंटिन्यू करेंगे तो हम ये पेनल्टी माइनस करेंगे अपना। तो डिसकंटिन्यू इफ आई एम डूइंग इट तो क्या होगा? सब पेनल्टी हम पे ऑफ कर देंगे ना इसी साल। हाँ, करेक्ट है? यस सर। ओके, so 37,500 is my penalty, and penalty you will transfer it. It's your expenditure, no? Yes, sir. 2,500 extra I'm paying, so my penalty will be 2,500. Over? Yes, sir. Over. See, when you are going to pay early, if you are want to close down the business. Close down the business in the in this year. Easy है बेटा? Yes, sir. Easy है अभी। ठीक है? यस सर। सर यही एक क्वेश्चन जैन में भी आया था, नॉट गोइंग कंसर्न बेसिस पे क्वेश्चन पेपर में देखा था मैंने। तो आपको आया था कि नहीं आया था? सर मैंने सॉल्व किया था, एक पॉइंट्स 2 पॉइंट्स पे दिक्कत हुई थी मुझे, ये डेवलपमेंट वाले पे दिक्कत हुई थी और इंस्टॉलेशन वाले पे। Now you can calculate your profit and loss account balancing figure. Take on कैल्सी। आप ही बताओ क्या लोगे कैल्सी पे? सर क्रेडिट साइड का पहले प्लस करेंगे, फिर उसका डेबिट वाले माइनस करेंगे। बोलिए। 450। ये सर 600 है। 450 कॉस्ट कंप्लीट करते हैं ना पहले। ओके सर। 4,50,000 प्लस 32,000। पूरे डिजिट्स नहीं लेने के बेटा, इट विल नॉट सेव योर टाइम। 450 प्लस 32 482। हाँ वो ठीक है। माइनस आप बताओ ना, माइनस 30। नहीं सर 300 लीजिए। 30,000 है। 3 लाख है क्या? 30,000 है। माइनस 30,000। यस सर। माइनस 400। माइनस 2। माइनस 13। माइनस 2.5। माइनस 14.9। तो कितना आया देखो प्रॉफिट एंड लॉस? 19.6। 19.6. So 19,600 is a profit. Where Yes, you will sir. add it in P and L, no? यस सर कैपिटल में 25 में 19.6 add. सर 44.4। हाँ बोलिए। नाउ सेकंड वन बोलिए कैल्सी पे। सर 450.6 प्लस 0.6 प्लस 40 तो 490.6 हुआ ये हमारा। ओपनिंग स्टॉक विल बी सेम हाँ बेटा, 30,000 इन बोथ केसेस। ओके सर। देन माइनस 30 माइनस 400 माइनस 6 माइनस 5 वेरी गुड, माइनस 10 वेरी गुड, माइनस 14.9 वेरी गुड। माइनस 2.5। So what is the closing balance? 22.2।
22,200. ओके, चेक। यस, इसको हम कैपिटल में अपना ऐड कर देंगे। कैपिटल में ऐड करेंगे या P&L में ऐड कर दिया मैंने? में ऐड करके फिर कैपिटल में शो होंगे। 25,000 में आई हैव एडेड 19,600 आई गॉट, नो? तो वो तो कॉस्ट का था ना। NRV पे 47,200, यहाँ पे 47,200 आएगा। यस सर। चलो टैली करो अभी। 60 बोलो। यस सर, 60 प्लस 47.2। 44.6। व्हाई आर यू मूविंग टू NRV फर्स्ट? कॉस्ट पे जाओ ना पहले। ओके सर, सॉरी सर। हाँ, 60 प्लस 44.6 प्लस 35 प्लस 12 हमारे 151। यस सर, 151.6। सेकंड वन 52 प्लस 32 प्लस 23 प्लस 7.5 प्लस 37.1। फास्ट करने का कैलकुलेशन। 151,600 इफ नॉट फॉलोड। हाँ, यस सर, यही आया मेरा भी 151.600 का है। नेक्स्ट। सर ये हमारा है NRV पे 156.100। कितना? 156.1। हाँ, 1,56,100। बोथ साइड्स। यस सर। हैव यू टैलीड? यस सर। इजी और डिफिकल्ट? सर इजी। चेक द आंसर। सब मैच। मैच्ड। Next. So now what is the accrual concept is asking the question number 2. You can do by your own now this question. Illustrate example 1. There is one more question, so that will be your homework. In test your knowledge, you will have the same question. ओके सर। यस सर, टेस्ट और नॉलेज में है ये। One question is there. TY के 10। TYK 10 10. नोट गोइंग कंसर्न है सर, NRV पे करना है हमें उसे। TYK 10. Okay, you have TYK 10. So everyone, if not going concern, you have to prepare only profit and loss account. सर इसमें जो 5th पॉइंट है, हाँ, इसी TY के में सर इस पे लिखा हुआ है कि स्टार्ट हुआ है डेफर्ड एक्सपेंडिचर, मतलब इसको डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हम ले लेंगे तो। हाँ, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर फ्रॉम 1 अप्रैल 2001 तो Yes, sir. 5,000, तो आप इसको 0 बता दोगे और पूरा का पूरा 15,000 P&L में ले लोगे इफ गोइंग कंसर्न इज नॉट फॉलोड। अंडरस्टूड? यस सर। शुड आई सॉल्व दिस और यू विल सॉल्व इट बाय योर ओन? हम अपने आप कर लेंगे, ये बस ये वाला था पॉइंट तो मैंने इसलिए पूछ लिया इस पे। ओके, सो इजी और डिफिकल्ट? सर इजी है। क्यों जनवरी का एग्जाम स्किप कर दिया आपने? सर मैंने स्किप प्रिपरेशन की वजह से किया था। और अभी आप मई के लिए दे रहे हो या सितंबर? सेप्ट। हाँ, सितंबर। क्यों इतना बड़ा गैप? सर प्रिपरेशन करके एग्जाम देना बेटर रहेगा, अगर प्रिपरेशन ना करके जाए तो। पहले के लेक्चर देखे नहीं थे आपने? नहीं सर। फिर कहाँ से किया था आपने? सर मैंने प्राइवेट? नहीं सर, प्राइवेट भी नहीं किया था, सेल्फ स्टडी स्टार्ट की थी पर किसी रीजंस की वजह से हो नहीं पाया था मेरा कंप्लीट। ओके, एंड नाउ
अभी इसीलिए कंसिस्टेंट हूँ, क्योंकि अगर कंसिस्टेंसी टूटती है तो फिर ट्रैक पे नहीं आ पाते। चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। यस, यस बेटा। सौम्या, सीए फाइनल के एग्जाम्स नाउ वी हैव फॉर 3 times। प्रेस रिलीज आ गया था कल। चलो अच्छी बात है, वी आर मूविंग टू बेस्ट थिंग्स। ठीक है, तो should I move to last illustration of the day? Yes, बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। चलो विल, ठीक है। यस निधि बेटा, डू हैव एनी क्वेरी? निधि, कैन यू रेज योर हैंड? निधि, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? ओके, अमन बेटा, यस, व्हाट इज योर क्वेरी? सर, बैक टू इलस्ट्रेशन नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर आई। किसमें? वो जो पेनल्टी वाला था ना, एडजस्टमेंट नंबर आई, जो अभी आपने कराया ओके, क्वेश्चन। पेनल्टी, you will add 2500 in that सर वो penalty बैलेंस amount शीट में, because सर बैलेंस शीट में अलग दिखाएंगे ना पेनल्टी को, आई मीन so you can show penalty separately or it's in एक्सपेंसेस loan पेएबल। account. Both are same, don't worry. सर So it's a part of loan amount na, ultimately you are paying it through loan only, तो सर उस पे इंटरेस्ट अगर पे करते हैं हम, तो लोन तो फाइनल अमाउंट पे पे करेंगे, या फिर जो लोन अमाउंट था हमारा ओरिजिनल उस पे पे करेंगे? बराबर है, बट पेनल्टी हम लोग लोन में ऐड कर देंगे। ओके सर, ओके, हाँ, बस बस यही था। यस। चलो फिर आज हम लोग वाइंड अप करते हैं। अजित सर, वाइंड अप कर लेना। यस सर। हेलो। ओके, हाँ निधि। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। मैं ये कह रही थी कि मैंने अभी अभी रजिस्ट्रेशन लिया है, तो मैं पीछे की क्लासेस तो कैसे कर सकती हूँ? अभी क्या ऐसे भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप कंटिन्यू करो, और जब भी आपको मौका मिलता है आप पिछले लेक्चर्स को भी बार बार देखते रहो। मतलब एक सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करना है तो आप पिछले लेक्चर्स भी देखिए, और इसके साथ साथ ये लेक्चर्स को आगे कंटिन्यू कीजिए। जो मैंने लास्ट टाइम ही बोला था, जो ट्रेन चल रही है उसको पकड़ लो, पीछे जाने की कोशिश मत करो, ट्रेन मिस हो जाएगी। ओके, तो आगे जहां से मिली है वहां से कंटिन्यू करो, यू विल अंडरस्टैंड इट, डोंट वरी। और जब भी टाइम मिलता है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ये चैप्टर कंप्लीट करना, ताकि आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाए। जी ओके सर, थैंक यू बायबैक सर। और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आपने स्किप किया तो भी चलेगा, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट को अच्छे से करना। ठीक जी है, सर, ओके। यस। एनी अदर डिफिकल्टी राजवीर? सर एक और चीज पूछनी थी बोलिए कि बोलिए सर बोलिए। मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो मैंने बुक ऑर्डर कर दिया है, तो वो बुक कब तक आ जाएगी? बेटा, नॉट अ राइट क्वेश्चन ओवर हियर, वी आर रिलेटेड टू ओनली बीओएस, नॉट अच्छा, रिलेटेड टू एनी रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। तो आप ओके ये एक बार इंस्टीट्यूट को मेल कीजिए या नंबर पे कॉल कीजिए। ओके, जी, ओके, थैंक यू सर। यस। यस राजवीर, डू हैव एनी क्वेरी? नो सर। चलो गाइस, तो विल स्टॉप फॉर अ डे। तो बहुत अच्छे से सेशन हुआ। यस, आज आपको बहुत सारी चीजें भी समझ में आई, एंड इन नेक्स्ट सेशन वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर नंबर 2 एंड वी विल फिनिश इट ऑफ। ठीक है, चलो, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। बाय सर, थैंक यू। यस यस यस।